सो हमें को जन डिस्कशन करथिले 40 ना 40 ओके गरम को होजे तो 40 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट कर देथिले या सुशील 41 नु ही स्टार्ट करबा So with reference to the ancient Indian history, the book Milinda Panha is best known for which one of the following? तो मैंने देखी थी वो बहुत टाइम रे एग्जाम तमरो मिलिंदा पन्हा रु ही आसुच ना नहीं मिलिंदा पन्हा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तमरो लाइक तमे छोट छोट एग्जाम थारु आरंभ करी के बड़ बड़ एग्जाम रे भी तमे ए क्वेश्चन टाको पाइबो हैला सो मिलिंदा पन्हा कोन इट इज ए डायलॉग बिटवीन नागसेन एंड योर Greek ruler that is Milinda हैला तो मिलिंदा कोन क्वेश्चन पचाउछन्ती व्हाट इज बुद्धिज्म बुद्धिज्म कोन हैला तो तांकर जो डायलॉग ता समस्त को ऑडिबल यस मैम ओके ओके ठीक अछि सो मिलिंदा पन्हा सेउडा की हमरो इट इज ए So it is a Milinda या Minender हमको है questions about the Buddhist religion and it is written by Nagasena. Okay. बुझियला समझते? So next question हमें जिबा and आ ऊपर जहाँ जहाँ तमरो information little ताको टिके देखि दउथिबो. हैला. So जल्दी जल्दी हमें questions पूरा cover करबा काना आज हमरो बहुत questions cover करबार अछि. ओके नेक्स्ट पचारिछि कि किछि किछि फ्रेज और डॉक्ट्राइन अछि एंड तार को एंशिएंट टेक्स्ट रो सेटा को हमें
डिराइव करिचे जेमति वसुधैव कुटुंबकम हैला अतिथि देव भव हैला त्रिमूर्ति हैला ए भले जो किछि किछि सत्यमेव जयते हैला तो को उपनिषद रु हमें आपको डिराइव करिचे तमरो क्वेश्चंस भी से जेमति कि तमरो सत्यमेव जयते कोठु आसीची मुंडक उपनिषद हैला तो सेमिति डिफरेंट डिफरेंट एंड एटा वसुधैव कुटुंबकम आसीबार भी तमरो बहुत चांस अछि बिकॉज़ एथरो कोठी थीम थिला एटा G20 रो थीम थिला कोन थिला G20 रो थीम कोन थिला G20 रो थीम साना परवीन कोन थिला G20 रो ओके सो ए वसुधैव कुटुंबकम ता तार कोन थिला थीम थिला तो समस्त आज जाई कि देखिबो कि G20 समिट कोठी हेतिला एंड इंडिया रो एथरो इश्यूज कोन थिला G20 रे कहां कहां को इनवाइट करा हेतिला वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वेरी गुड शुभलक्ष्मी हैला सो वसुधैव कुटुंबकम तो तमे भाबिबो कि वर्तमान सब जिंस तमर कोन रिलेटेबल करके पकोउची जोडा को न्यूज रे अछि हैला तो सेमिति तमे क्वेश्चंस पुरा को भी एठु गेस कर परबो कि ए क्वेश्चंस पुरा को एथरा आसी पारे आ नुह कि हां मैच करके आसी पारे तमरो सपोज तमरो वर्तमान जीएसटी न्यूज रे अछि कि तमरो जीएसटी कलेक्शंस भलो अछि तो जीएसटी ऊपर क्वेश्चंस पकई पारे तो एवरी सब्जेक्ट्स रे इकोनॉमी हो पॉलिटी हो एंड तमरो रिसेंटली इलेक्शन सरीची एंड तमे देखिचो कि इलेक्शन कमिशन तमरो कितने पावरफुल ए टाइम रे तो इलेक्शन कमिशन नो क्वेश्चन समय पढ़ी के जीवो देन तापरे जो वर्तमान जो सिचुएशन चली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सेथुरो क्वेश्चन आसी पारे इलेक्टोरल रिफॉर्म रो क्वेश्चन आसी पारे तो एई भला जिंस गुडा को जोटा वर्तमान न्यूज रे चलछि तमे तापरे टिके अधिक प्रायोरिटी देकी पढ़ी की जाओ सो दैट कि तमे एग्जाम रे ए भला क्वेश्चंस गुडा को छाडी की जेमति न आसो हैला सो त्रिमूर्ति कोठु आसीछि एटा सो हमें क्वेश्चंस करबा फर्स्ट होछि त्रिमूर्ति कोठु आसीछि मैत्रेय उपनिषद रे रेडी भल से देखा जाउ नै तमान क्वेश्चन ने भल से देखा जिवो हैला क्वेश्चन जोडा नैचो बाकी वसुधैव कुटुंब कोठु आसीछि महा उपनिषद रो वेरी गुड महा उपनिषद रो एंड अतिथि देव भव तैत्रीय उपनिषद रो हैला so 1 and 2 3 is your correct and 2 is incorrect तो तुमको जहां देथिबो क्वेश्चन तमे से बळा करबो हैला सो मो आंसर डिस्कशन करूनी डिटेल एनालिसिस हे गेला तो केतेटा पेयर ठीक अछि दुईटा पेयर ठीक अछि Next, consider the following statement with reference to the sermon tradition. काली हमें डिस्कशन करिथिले कि अशोक कोन करछंती मेजर रॉक एडिक्ट तानो जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट थिला थ्रू मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 3 रे हैला मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 3 रे से कहिथिले रेस्पेक्ट टू ब्राह्मण सरमन एंड पेरेंट्स हैला तो दैट मींस ब्राह्मण मानो को भी रेस्पेक्ट दियो श्रमण मानो को कथा भी से कहिथिले कोन श्रमण किए ना जो माने तमरो हेट्रोजेनियस सेक्ट बा जहा को हमें कहूचे बुद्धिज्म जैनिज्म एंड अजभिका हैला तो सेमानु कहा जे श्रमण तो से कोई कोन श्रमण ऊपर कहिथिले इट emerged in opposition to the Vedic sacrifice and rituals कोन हबो इटा करेक्ट हबो या इनकरेक्ट हबो सो तुम्हें मन रखो 6th सेंचुरी बीसी बेलको कोन हैला ना ब्राह्मण क्षत्रिय अलायंस ता सहित एक्सप्लॉयटेशन हैला अदर 3 वर्नर्स रो सॉरी अदर 2 वर्नर्स रो हैला सेठी तांको बहुत एक्सप्लॉयटेशन हैला देन हाई कॉस्टली रिचुअल्स हैला बहुत कॉस्टली रिचुअल्स गुडा को सेरेमनीज गुडा को हैला तो आगर कोन हैला 3rd सेंचुरी बीसी बेलको ए सरमन्स गुडा को देखा देले जो थरे कि कोन करा गला कि ए जो वैदिक सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स थिला तारो अपोजिशन माने आसिले And second कोची Ashoka patronized the sermons by dedicating caves to please their philosophers. तमे देखिथिबो काली भी हम गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करथिले कि अशोका अजभिकास मानु को caves दे दोथिले okay then the worship of yakshas started by the sermons later assimilated into Hinduism. मु तुमको काली भी कहिथिली यक्षस को विषय रे यक्षिस को विषय रे जोथरे कोन मु कहिथिली कि हिंदुइज्म रे ही हमरो थिला बुद्धिज्म रे थिला
एंड जैनिज्म रे भी आंको विषय रे थिला तेणु एठी तो देछि कि हिंदुइज्म को असिमिलेट हैला सेटा भूल काहे कि ना हिंदुइज्म रे ऑलरेडी थिला हिंदुइज्म रे एक्शंस को विषय रे थिला एंड लैटर पार्ट रे एगुडा को बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को असिमिलेटेड हैला ना कि बुद्धिज्म रो हिंदुइज्म को जाइछे हिंदुइज्म रो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को जाइछे बुझियला सो थर्ड स्टेटमेंट ता इनकरेक्ट अछि बाकी 1 2 आर करेक्ट ओके नेक्स्ट हम जिबा consider the following statements with reference to the Mauryan administration सप्तांग थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट इवन तमरो कोठी ना तमे गवर्नेंस में भी सप्तांग थ्योरी विषय टिके टिके पढिबो बुझियला नै जो सेवन स्टेट क्राफ्ट विषय कौटिल्य कहिथिले जोथरे कि किंग कोन अमर्त्यस माने कोन कोष कोन फोर्ट कोन तांकर इंपोर्टेंस कोन से सब विषय से कहिथिले सो सेवन स्टेट बा सेवन जो एलिमेंट्स अछि ता ऊपर की कहिथिले कौटिल्य कहिथिले तेणु ए पार्ट केवल एथि पई तमे पढोनी कि प्रिलिम रे आसीबो कोन गवर्नेंस रे भी तमर आसीबो एंड पर्टिकुलरली जो माने पबाड ऑप्शनल लखिचो या पीएसआर ऑप्शनल लखिचो से माने भी तो सप्तांग थ्योरी पढिबो ओके so element state administration and it is correct then the armed forces were administered by a board of officers ठीक अछि हमें देखिबा second statement देखिबा then third statement कहछि Magadha was part of the central provinces मन रखो ए जे स्टेटमेंट ठीक अछि कोन कहछि Magadha was a part of central provinces तापर किंतु एठी कहि देला कि सुवर्णगिरी was the capital no it is Pataliputra it is Pataliputra was the capital so हमें एठी देखिबा कि थर्ड स्टेटमेंट हमें रॉन्ग प्रूफ करले तो हमें आंसर काढी पारुचे ना नाही so third जोठी अछि कोन पचरि छि से given are not correct not correct देछि तो ता माने गोटिए ही कोन अछि एटा इनकरेक्ट अछि so the armed forces were administered by a board of officers ए स्टेटमेंट हम तो कहितली परे कहबे तमे कहितली परे कहबी बिकॉज़ हम माने क्लास रे जो माने मोर सब थिले से माने जानि थिबे कि मु गोटे तो सप्तांग थ्योरी एटा माने पढा हैतिला आ गोटे पढा हैतिला कि मेगास्थेनिस Mauryan administration ऊपर कौन कहछंती and according to Megasthenes there were 30 members थिले बुझियला केते मेंबर्स थिले 30 मेंबर्स थिले and ए 30 मेंबर्स को 6 कमिटीज रे डिवाइड करा हैतिला मन रखो केतेला कमिटी रे डिवाइड करा हैतिला 6 कमिटीज रे डिवाइड करा हैतिला and सेथिरे कोन होइतिला ना डिफरेंट डिपार्टमेंट बा डिफरेंट वर्क्स मानु को दिया जाउथिला बुझियला जेंति हमर बे पोर्टफोलियो सिस्टम अछि मिनिस्टर्स मानको भितरे सेमिति मानको दिया जायथिला एंड एटा काहर इयरो मिलि जे मेगास्थेनिस को इयरो बाकी कौटिल्य विषय किछ कहि नांती एटा किए कहछि मेगास्थेनिस कहछन्ती ठीक अछि तो क्लास रे जो माने थिला से माने बेटर रिलेट कर परिबो so second statement भी correct अछि third is only incorrect so answer is your 3 only अच्छा मु जेंति गोटे एठी एबे भूल कली जस्ट रिसेंट तमर एबे कि मु देखि देली कि ए दिटा करेक्ट अछि त आंसर होची 1 and 2 सो आंसर भी एठी अछि 1 and 2 तो एग्जाम रे ए भले भूल भी हेई परिबो तने तुमको कोन देखिया को पड़िबो आर नॉट करेक्ट से देछि तो पढी कि भल से तुम माने करबो हैला Consider the following statements with reference to the Jain philosophy. अच्छा तो मैंने देखो बहुत क्वेश्चन आ भीतर अछि बुद्धिज्म जैन फिलोसॉफी हेटेरोजेनियस सेट डिफरेंट जो हमरो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस को रिलीजन आसिला त आ ऊपर ही बहुत किछि अछि तेणु तुम मैंने कौन करिवो ना बुद्धिज्म जैनिज्म को किंग कोटा को पैट्रोनाइज देथिले तो सेगुडा को तमे टिके भल से पढी के जीवो सो दैट कि जदि कोनोसी क्वेश्चन बुद्धिज्म जैनिज्म रिलेटेड आसिला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर गुडा को भी गुडा को तो तुमे आको पढी के ही जीवो तो क्वेश्चन तो हमें एठू सॉल्व कर देबा बट तमने कांसेप्ट क्लियर करके एग्जाम को जिबारो अछि so consider the following statements with reference to the Jain philosophy
While Nyayavada is a theory of standpoints, Sadyavada is a doctrine of maybe. हैला तो जदि तुम माने प्योरली जैनिज्म टा जानि टिके भल से पढिबो ताले एटा को तुम करि पारिबो एंड ए स्टेटमेंट टा एग्जैक्टली करेक्ट अछि कारण एटा कोन करे थ्योरी ऑफ स्टैंड पॉइंट दे कि गोटे जिंस हैला ताको मो को अप्रोच रे सॉल्व करिवो तो सेटा मोर स्टैंड पॉइंट रहइबो एंड ए जो साध्यवाद कहिछि एटा होछि कोन मे बी ए जिंसटा करेक्ट हे पारे मे बी ए हे पारे मे बी बी हे पारे बुझियला नै तुम लॉजिक जेमते प्रूव करो कि मे बी ए और मे बी बी so then next होछि the theory of anekantavada emphasizes that truth and reality have multiple aspect जेतल देखिबो तमाने आज एठी स्टूडेंट अछ काली को जण जण ऑफिसर हबो तो सेते बेले देखिबो कि कोन होछि ना तमे तमरो गोटे किछि इश्यू हैला सोशल इश्यू गोटे सोशल इश्यू रो केबे हेले गोटे पर्टिकुलर माने कॉज न थाए डिफरेंट कॉज थाए सोशल इश्यू केबे हेले प्योरली सॉल्व हो परिबो नाही कोन होय ना तारो डिफरेंट एस्पेक्ट थाए तो अनेकांतवाद से जिंसटा कहूची कि पर्टिकुलर जगह रे कम्युनिटी वायलेंस होउची दैट मींस मे बी लोकन भीतर एजुकेशन कमी अछि ये गोटे कॉज मे बी लोक माने रिलीजन को अधिक इमोशनली अटैच्ड अछंती ये भी गोटे कॉज हैला मे बी पॉलिटिकल अथॉरिटी माने बा पॉलिटिकल लीडर्स माने सेठी जांगी लोक मानन को भीतर कॉन्फ्लिक्ट को जानी सुनी क्रिएट करूछंती एटा भी गोटे कॉज तेनु प्रॉब्लम होची कम्युनिटी वायलेंस इन ए पर्टिकुलर प्लेस बट कॉज डिफरेंट तो सेटा होची अनेकांतवाद सो एटा भी करेक्ट अछि सो कहछि व्हिच आर करेक्ट कोटा कोटा करेक्ट आ भीतर both 1 and 2. Next, which one of the following inscription does not explicitly mention the name Asoka? Mane rakho. एटा ए क्वेश्चंस गुडा को तमे कोनोसी जगह रो पढिया अपेक्षा मु भाबुची एमसीक्यू रे बेटर तमे एटा को सॉल्व कर दबो ए गुडा को एते आउ प्रैक्टिस करबा दरकार नहीं कोन हैला कंफ्यूजन कोथि रे अछि की Okay. So which one of the following inscription Asokanka na koti nahi? So that is Grinar inscription. Grinar inscription ne Asoka jo name ta nahi. Hela? Au baki sabutire Asokanka na achi. So next time jiba. Acha. Ei questions ta tamar kon hoba na First Buddhist Council, Second Buddhist केबे हेथिला किए अरेंज करिथिले किए ताकू चेयर करिथिले ए जिंस गुडा तुम माइंड रे रहिबा दरकार बुझि पालो कि डिफरेंट काउंसिल बुद्धिज्म रो हो बा जैनिज्म रो हो को टाइम रे हेथिला किए करिथिले ए सब जिंस तमे भल से पढि के जिवो सो से कहूची फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल completion of Sutta Pitaka and Vinaya Pitaka मने रखो जो त्रिपिटक हमर अछि सेटा हमर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ले डिफरेंट पिटक रे डिवाइड हेतला तो फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड से कहूची स्प्लिट ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर इनटू सबीरावाद एंड महासंगिक सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक अछि त माने पढिले एटा जानि परिबो हैला कि डिफरेंट सेक्ट रे हमर डिवाइड करा हेतला स्प्लिट हेतिला बुद्धिज्म Then third statement से कहिची origin of Mahayana sect of Buddhism एटा भूल अछि actually third रे कोन हेतिला codification of the Abhidhamma Pitaka बुझियला third council रे कोन हेतिला codification of the Abhidhamma Pitaka and fourth रे हेतिला तमरो origin of Mahayana sect of Buddhism and Mahayana sect मन रखिता सबले एटा गोटे माने कोन थिला broader perspective दोथिला बुद्धिज्म के हैला ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बाकी जो हिनायन थिला सेटा कोन थिला नैरो माइंडनेस थिला बुद्धिज्म को नै के बुझियला ने तो ए जिंसटा टिके टिके मन रखो एंड तुमको आ गोटे होमवर्क होची कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड हिनायन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एटा भल से पढिथिबो तुम माने एंड ए जो सबीरावाद एटा रहला एटा भी तमरो जो हिनायन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को इन्फ्लुएंस करिथाय एंड एटा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थाय हला सब जिंस रे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग
तो एटा तुम मैंने टिके भलसे पढ़िले बुझी पारिबो तो एई जो मु तुम माने कहूची भलसे पढ़िले बुझी पारिबो काहे कि ना जो माने हिस्ट्री पर्यंत देखिनो तेणु मॉक बेले एते किछि जिंस डिस्कशन करि हबो नाही तो माने भी जानिचो काहे ना मोर ओटे टाइम थाए क्लास रे कोन हमें पढ़ै पारू कोई बुझै पारू बाकी एठी ओटे टाइम थाए एंड तुम माने जो जो पॉइंट्स कहूचे सेगुडा जाई खाली नेट रे सर्च कर दबो बस खाली किछि सम्यक धारणा तुम मानको पाखरे थाओ हैला so only two pairs are correct acha ठीक अछि next question जाउची while Gandhar and Amravati schools were mainly influenced by Buddhism Mathura school was influenced by both Hinduism Buddhism हैला आर थीम तुम माने कोन एथु देखिबो कि गंधर स्कूल ऑफ आर्ट किछि ता ऊपर पॉइंट पढिबो तमरो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ता ऊपर किछि पॉइंट रेडी करो देन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ऊपर किछि पॉइंट रेडी करो कारण एई भलिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्वेश्चंस गुडा को तमरो वर्तमान प्रीलिम रे आसुचे तेणु मु चाहे ना कि तुम माने गोटे भी क्वेश्चंस एई भलिया थीम क्वेश्चन जोडा हमें कहूचे माने गारंटी क्वेश्चन से गुडा कहा जाय हिस्ट्री रो तेणु तुम एगुडा को छाड़ी के आस सेडा केबे मते भल लागिवनी तेणु मु बेटर कि तुम माने ई सब जिंस रे जस्ट किछि किछि पॉइंट्स इंटरनेट रू कलेक्ट करके गोटे छोटो खाता करो कि एगुडा को मोर माने आसीबा तो बहुत 70% चांस अछि बुझियला नै तो से कहूचे कि गंधर एंड अमरावती टा टोटली बुद्धिज्म थिला बट मथुरा स्कूल ले हिंदुइज्म बुद्धिज्म थिला करेक्ट एटा ठीक अछि एंड केवल हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म भी तमर हैला सो ठीक अछि then unlike Amravati school the sculptures of Mathura and Gandhar school were made using white marble एटा की कहि परिबो मते कि ठीक अछि या भूल अछि कोन पचार से इज आर करेक्ट वेरी गुड हैला तो बेले बेले कोन हुए ना ए व्हाइट मार्बल देखि कि पिला कंफ्यूज हो जांती तो स्टेटमेंट एठी कोन छी रॉन्ग अछि एंड ओनली आंसर इज योर करेक्ट हैला एंड तो मैंने किछि किछि पॉइंट्स लिखिबा को चाहू छ कि ना एडा तो मैंने कलेक्ट करि दबो समझते ओके नेक्स्ट होची consider the following statements Buddhist text Anugutta Nikaya gives a list of 16 Mahajanapada 16 Mahajanapada काली हमें डिस्कशन करथिले एंड तुम मानको कहिथिली कि कोन तांगर कैपिटल से को प्रेजेंट डे को स्टेट रे आसुचंती एंड तांको ऊपर 2-3 लाइंस जदी किछि यूनिकनेस अछि गोटे खाता रे रेडी करो एग्जाम पाई जोडा जोडा इंपोर्टेंट अछि तो एटा भी ठीक अछि कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट अनुगुत निकाय गिव्स अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद ठीक अछि स्टेटमेंट ता द नेक्स्ट स्टेटमेंट आमे जिबा Kaushambi was situated at the confluence of river Ganga and Yamuna at modern day Allahabad thare se kochi Kaushambi ta kouthi ko river pakhare Yamuna and Ganga and kouthi achi Allahabad pakhare hela then जो माने मो क्लास करथिबो पर्टिकुलरली आसका ऊपर मु कोन करथिली गोटे डिफरेंट पॉइंट देखिली स्टार मार्क करबा को कहिथिली पिला माननकु काहे कि ना एटा होची गोटे मात्र महाजनपद जोटा कि साउथ रे अछि बुझियला नै सो आसका सो थर्ड स्टेटमेंट भी तमरो ट्रू so all the three are correct then which of the following places have major rock edicts of Ashoka मु काली कहिथिले कि जो 14 रॉक एडिक्ट्स अछि मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड कोठी अछि 10 साइट्स रो अछि 10 साइट्स रो ओडिसा रे दुईटा अछि कोठी ओडिसा रे कोठी अछि जौगड़ एंड आ कोठी अछि धौली किछि नै गो मुंड रे काली बाकु आइतिला धौली तो से कहूची जो 10 साइट्स तम मानकर काम होची खाली 10 साइट्स सब समस्त निज निज खाता रे लिखि दबो हैला कोठी 10 साइट्स अछि ता भितर कोठी अछि साहाबाग्राही एंड योर ग्रीनार हैला तो ए दीटा ता भितर अछि तो एठी मु तुमु चारटा कहि दिलानी आ छटा तम माने कलेक्ट करिवो
Then consider the following statements with reference to the Pallava rule. They contributed to the growth of Brahminical religion in their kingdom. They contributed to the growth of Brahminical religion in the kingdom, in their kingdom. मने रखो एटा जो पल्लव रूल थिला एठी ब्राह्मणिज्म बहुत भल से स्प्रेड करिथिला एंड जेहेतु ब्राह्मणिज्म अछि ता माने कोन रिचुअल्स भी रहिबो एठु गोटे जिंस हम डिराइव करले फर्स्ट स्टेटमेंट रु किसे कहला ब्राह्मणिज्म को स्प्रेड करथिला ब्राह्मण रिलीजन को अधिक अधिक स्प्रेड करथिला ता माने कोन थिबो ब्राह्मण्स माने अछन माने रिचुअल्स एंड सेरेमनीज थिबो तो रिचुअल सेरेमनी सतले कोन जो डिफरेंट यज्ञ हुए अश्वमेध यज्ञ वाजपेय यज्ञ राजस्व यज्ञ सो एठी से देछि सेकंड स्टेटमेंट देखो कि दे डिड नॉट परफॉर्म रिचुअल्स एठी ताले स्टेटमेंट रॉन्ग होबो या राइट होबो रॉन्ग होबो कारण ब्राह्मणिज्म को जदी सपोर्ट करूची ए दीटा स्टेटमेंट परस्पर कोन करछनी कॉन्ट्राडिक्ट करूछनी तो तुमे जदी टिके निजर माइंड को खर्च करबो ताहाले एठी तमे स्टेटमेंट को कोन कर परबो एनालिसिस कर परबो कि एटा रॉन्ग होबो सो नेक्स्ट हमें कोन जिबा आउ देछि कि स्टेटमेंट Marco Polo visited Kanchipuram during the reign of Narasimhavarman. No, it is Wensan. Wensan asile Marco Polo asinathile. So third statement भी हमर कोन अछि incorrect अछि. So only one statement is correct. एटी की asile Wensan asile and he was a Chinese Buddhist traveler. Okay. So next question हमें जिबा Which of the following are classical dances of India? तो काली भी हमें छौ ऊपर डिस्कशन करिथिले छौ नृत्य ऊपर डिस्कशन करथिले नै हां तो which of the following classical dances कोडा कोडा हबो क्लासिकल मणिपुरी ओडिसी सतरिया एंड छौटा ही कोन एटा गोटे क्लासिकल डांस नुह किंतु ओडिसा रे गोटे मयूरभंज छौटा बहुत फेमस जोठी कि तार गोटे यूनिकनेस अछि मास्क से माने पिंधंती नाही वेरी गुड ओके सो एटा रहला कोन आउ सतरियाटा कोठी कोठी के कहि परिबो सतरिया डांस कोठी वेरी गुड सो ता समासम वेरी गुड हेलो सो आंसर कोन हैला 1 2 एंड 4 तो हां एठु कोन कि डिफरेंट क्लासिकल डांसेस एगुडा को भल से पढ के जिवो को स्टेट को समान बिलोंग्स करूछंदी हैला सेगुडा भल से देखि के जिवो एंड पर्टिकुलरली ओडिसा हाँ प्रयागराज प्रशस्ति या अलाहाबाद प्रशस्ति बहुत इंपोर्टेंट जे भी हिस्ट्री क्लास प्रॉपर्ली करिवो सेठी तम माने अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऊपर जोठी भी तम माने पढुचो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऊपर बहुत सारा तथ्य मिले हैला बहुत सारा रूलर्स मानक विषय रे समानकर एडमिनिस्ट्रेशन विषय रे बहुत सारा तथ्य तमरा ई प्रयागराज प्रशस्ति बा अलाहाबाद प्रशस्ति रे मिले तो से कौन कहिछि इट मेंशन्स अबाउट द असेशन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त पर्टिकुलरली ए स्टेटमेंट माने बहिरे तमर थुआ हिछि तो तुम एनसीईआरटी पढिले एटा बुझी पारेबो हैला सो इट मेंशन्स अबाउट द ठीक अछि समुद्रगुप्तंग विषय रे कहै जायछि इट वाज कंपोज्ड बाय हरिसेन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट मन रख बेले बेले कौन हुए एठी ना तुम कंफ्यूज करिया पई ब्राह्मी लैंग्वेज संस्कृत स्क्रिप्ट दे देथिबो एमिति भी कंफ्यूज कर दबो किंतु मन रख लैंग्वेज ता कोन संस्कृत एंड स्क्रिप्ट ता होची ब्राह्मी हैला सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट देन नेक्स्ट होची consider the following statements right action and right speech are among the 4 noble truths taught by Buddha एठी टिके कंफ्यूज पिला होंती गोटे अछि 8-fold path and आउ गोटे अछि 4 noble truth and दीटा को ही कोन बुद्धिज्म रिलेटेड मन रख दीटा कोन बुद्धिज्म रिलेटेड तो तुमको एठी से देखो तुमको भी लागिबो हां एटा तो गोटे ठीक जिंस एटा भी ट्रुथ रे थाई पारे कि टिक मार दे कि पळे आसबो कारण राइट एक्शन एंड राइट स्पीच निश्चित तो बुद्धिज्म कहितिबे तो सेटा कोउथरे अछि तमे जानि परिबोने तो सेतिबे तमर काम होची जदी 8-fold path न मन पडुची ए 4 ट्रुथ ना तो एटलीस्ट मन रखि दियो सो दैट कि तमे एभला क्वेश्चन सॉल्व कर पारिबो बुझियला ना नाही कि जदी तमर 8-fold path मन पडुनी ए चारटा जिंस भल से मन रखि दियो सो दैट कि तमे बुझि पारिबो
कि ट्रुथ रे जिंस तो नाही तेणु स्टेटमेंट एठी कोन हेजिबो रॉन्ग हेजिबो बुझियला ना म कोन कहली तेणु एटा होची कोथरे अछि राइट एक्शन एंड राइट स्पीच कोथरे अछि एट फोल्ड पाथ अछि then Buddhism recognizes the existence of God and eternal soul एठी भी मन रखो एटा भी स्टेटमेंट कोन अछि इनकरेक्ट अछि कारण बुद्धिज्म ना गॉड कर एक्जिस्टेंस ऊपर ना गॉड नथिबा ऊपर माने से अछंती कि एक्जिस्टेंस रे अछंती कि एब्सेंस रे अछंती ता ऊपर से कोनोसी मंतव्य भी देई नाहंती बुझियला एंड सेते पई बुद्धं को कोन कह जाय एंगोइस्टिक बोली कह जाय हला मने रख एटा सो एटा हबो नाइदर वन नॉर टू दीटा का स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट अछि with reference to Jainism consider the following statement original doctrines taught by Mahavira were contained in 14 old texts known as Purvas एटा completely correct अछि एथे किछि भाबिबा नाही एटा को कोन करा छै 14 old texts known as Purvas एथिरे तांकर जोटा original doctrine महावीरांकर तो सेउडा को सेथिरे अछि हला then next होची Mahavira believed that the world functions according an eternal law ए eternal law टा कोन ना decay and development बुझियला eternal law टा कोन decay and development that means ना कोनोसी जिंस कमुची ना कोनोसी जिंस बढ़ुची सब एटा कोउथरे अछि कांस्टेंट रे अछि बुझियला नै and Jainism believed that the monastic life was not तो हां एटा कोन हैला करेक्ट हैला सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हैला then कहिचे Jainism believed that the monastic life was not always essential to attain salvation and the householder can also attain it ए स्टेटमेंट तुमको कोन लागुची जदी मु कहबी Jainism होची एक्सट्रीम पेनांस सब जिंस रे एक्सट्रीम लेवल एक्सट्रीम पेनांस एक्सट्रीम फास्टिंग हैला एक्सट्रीम फास्टिंग then strict rule एगुडा को ऊपर अधिक प्राधान्य दउची ताहले मु कहि परिबे कि साल्वेशन गोटे हाउस होल्डर पाई परिबो नाही ताको सबले कोन करबो से बाहर को जाएंगे जो वर्ल्डली पोजीशन अछि जो मामे कहूचे कि जो माने ए धन रे रहिले जो जिंस फैमिली वाइफ फ्रेंड एगुडा सब तुमको छाड़ीबा को ही पड़िबो डिजायर को छाड़िया पड़िबो तुमको जाएंगे तापर जाएंगे साल्वेशन मिलेबो तो थर्ड स्टेटमेंट ता कोन अछि incorrect अछि okay so 1 and 2 are correct with reference to Buddhism consider the following statement the Pali canon of Buddhism is divided into 3 collections called Tripitaka ame kali Tripitaka bisare padhithile okay then Nagarjuna was one of the exponents of Hinayana Buddhism no eta kon achi bhul achi se kotu thile Mahayana hela the goal of Hinayana Buddhism was to arrive at nirvana in the present life eta completely correct achi Hinayana Buddhism mane rakho sabule kon self centered nije ame kemti salvation pai jibu बुझियला सेल्फ सेंटर्ड हैला इगोइस्टिक मोरल आरो मने रखो एटा इगोइस्टिक मोरल एंड एटा वेलफेयर ऊपर एते भी विश्वास करे नाही नो बिलीफ ऑन वेलफेयर हैला एटा होची सब हिनायन तो से कहूची कि निर्वाण इन द प्रेजेंट लाइफ रे पाइबा तार होची गोटे कोन गोल तो एटा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट अछि एंड वन स्टेटमेंट करेक्ट अछि बाकी टू स्टेटमेंट ता इनकरेक्ट अछि काहे ना एठी से देछि हिनायन बुद्धिज्म बट नागार्जुन थिले कोन महायान बुद्धिज्म रा ओके so 1 and 3 are incorrect pacharichi okay incorrect 1 and 3 संगम लिटरेचर हम क्लास रे पढिथिले न मन नै Tolkappiyam is the treatise on Tamil grammar को आइथिला ना नै ठीक अछि okay and Tirukural was written by Tiruvallar
एटा भी स्टेटमेंट ठीक अछि सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ए क्वेश्चंस गुडा को मु बेसी डिस्कशन करिबि नाही बिकॉज़ ए गुडा को तुम माने भलसे संगम लिटरेचर पढिले ही जानि परिबो एंड एटा फैक्ट वाला क्वेश्चन भलिया ए गुडा को तमे पढिले मन रखि परिबो नले हे परिबो अच्छा consider the following statement with reference to sangam age ro eta kon पचाउची एडमिनिस्ट्रेशन विषय रे हम माने क्लास रे पूरा भलसे डिस्कशन करथिले संगम एज रो एडमिनिस्ट्रेशन तांगर कोन रहितिला केमति केमति को ऑफिसर्स माने थिले एंड कोन नाडू हला सेरा सब पढितिले हमें सो इट बी सेम क्वेश्चन आसीची कि ट्रांजिशन फ्रॉम pastoralism to agriculture was observed in the marutam areas marutam कोन marutam होची तमरो जो हमर fertile land कोन एटा fertile land एंड से कहूची कि मरुतम एरियाज रो आमे एटा को एविडेंस पाइचे कि लोक माने फर्स्ट कोन करथिले पैस्टोरलिज्म करूथिले माने गोटे जगह आ गोटे जगह बुली के एम्ति तन खाइबा संग तापर से माने कोन करले ना एग्रीकल्चर को आसिले तो ई जो ट्रांजिशन पीरियड हमको ई एरियाज रे देखिबा को मिले तो एटा कोन हबो ठीक हबो हैला आंसर ठीक अछि मार्क स्टेटमेंट ठीक अछि देन नाडू वाज कंसीडर्ड द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटी नाडू को कोन कह जे राष्ट्र hello nadu ko kon kaje rashtra and se koche it is the foundation of the polity so this statement is also correct then koche bhelas were the custom officers who regulated the foreign trade ei statement ta kon achi wrong achi kano bhelas hochandi agriculturalist ha agriculture related so it is deichi custom officers so statement eti kon achi wrong achi so answer ta hele kon hobo 1 and 2 Which of the following are Neolithic sites in India? मु काली क्वेश्चन टा डिस्कशन करथली कि आदिचनल होची कोन मेगालिथिक पीरियड रो कोटा काली हम एटा डिस्कशन करनथिले एटा होची कोन मेगालिथिक रो तो आउ जो बाकी चार्टर होइला मेहरगढ़ बुरजाहम चिरांद एंड एटा कोन दाउजली हडिंग तो एई चारटा होची कोन तमरो नियोलिथिक साइट्स हैला आ बाकी एटा होची मेगालिथिक साइट्स सो आंसर भी तमरा एठी देखि दबो कि ऑप्शन अछि ना ओके 1 2 4 5 आर करेक्ट then next question consider the following statement Dhurpad is of a temple origin and find in mention in Natya Shastra and Khayal is characterized by the frequent use of tans in the composition. देखो एटा होची गोटे डिफरेंट म्यूजिकल हमर प्रो क्वेश्चन पकई छी कि म्यूजिक रे कोठी कोन केमति रुहे तो मन रखो ध्रुपद इज ऑफ द टेम्पल ओरिजिन एंड एटा ठीक अछि हला ध्रुपद म्यूजिक हमर सब एडा तो एटा ठीक अछि and khayal is characterized by the frequent tans कुडा को कोठी मिले khayal नहीं अधिक मिले then second से कहूची ध्रुपद reached Zenith in the court of Jahangir तो जते तमे तमरो आर्ट एंड ये रे पढिबो सेते बेले तमे अकबरंकर जते मिडिएवल ये रे पढिबो ई ध्रुपद विषय रे पढि पारिबो सो ध्रुपद रे कोन होची ना अकबर को टाइम रे बहुत तार फेमस हेतिला का टाइम रे अकबर को टाइम रे नॉट कि जहांगीर को टाइम रे so 3 statement are the incorrect achi then alap is given more room in the khayal music as compared to the dhrupad music no eta adhiko koth re achi dhrupad music re achi and kom achi khayal le and khayal le adhiko kon achi tans achi bujhila so this statement 3 and 4 ora incorrect hela so se answer kon bachechi kota correct so correct kota habo 1 and 2 Then which of the following statements are correct with reference to the Jain philosophy? The sum total of matter in the universe remains the same. It just टिके आगुर मु तमको कहथिली कि कोनोसी जिंस कहउनी बढ़ुनी कि कोनोसी जिंस कमुनी तो एटा होची माने जहा जतिके टिके होची सतिक रो पुनी डेवलपमेंट हे जाउची एंड सेति पे एटा कहै जे कि remains same सबले सेम ही होची एंड से कहै time is eternal and without beginning so time being eternal eta vise kahithile the universe has a form and unalterable shape which is measured by unit called raju means kono
कि गोटे लार्ज बॉडी हैला गोटे लार्ज जिंस को से बुझौचे एंड सेटा को मेजर करा होची कोथिरे राज्य रे एंड एथिरे कोन अछि तीनटा को स्टेटमेंट ही करेक्ट अछि बुझियला तीनटा को स्टेटमेंट कोन अछि करेक्ट अछि According to Kautilya's Arthashastra, consider the following statements. Tax could be raised in the emergency only in the fertile areas with irrigation facilities. तो सी कहथिले जदि कोनोसी emergency पड़िला स्टेट रे कोनोसी emergency पड़िला ताहले टैक्स केवल कोठी पढ़ै हबो जो गुडा को fertile land अछि fertile land plus सेठी इरिगेशन भी अछि बुझियला नै एंड ए टैक्स केते रु केते 1/3 रु 1/4 भितरे रहइबो बुझियला 1/3 रु 1/4 या माननो जे टोटल स्टेट रे जोठी इरिगेशन नाही जोठी फर्टाइल नाही सेठी तमे टैक्स बढ़ै परिबो जेति के अछि रहइबो किंतु जदी इमरजेंसी पढिला ताहले जोडा फर्टाइल लैंड अछि प्लस सेठी इरिगेशन फैसिलिटीज अछि हमें सेठु कोन आनि परिबा टैक्स बढ़े परिबा एंड दैट टू बी 1/3 रु 1/4 बट कोन देखा गला कि माने दैट मींस 1/4 रा कोन होठी हाईएस्ट टैक्स ना नहीं एई टाइम रे बुझा होतला कि हाईएस्ट टैक्स कोन 1/4 किंतु हमें पर देखि जे के टैक्स को समान बढ़े भी दउथिले समय समय रे then revenue was collected directly from the individual cultivators without intermediaries किछि मिडिलमैन सेठी रहबार किछि नथिला हैला तो सेठी कोन होतिला कि बिना इंटरमीडिएट रे भी तमे रेवेन्यू से माने कलेक्ट करथिले एंड सेठी पे तांगर ऑफिसर्स भी थिले बुझियला एंड एटा को सोर्स रा हम जानि जे मेगास्थेनिस को सोर्स रो कि जो डिफरेंट 30 मेंबर्स थिले 30 मेंबर्स को 6 कमिटीज रे डिवाइड करा हैतिला एंड से 6 कमिटीज रे गोटे गोटे कमिटीज को डिफरेंट रोल दिया जाउथिला हैला सो एटा भी ठीक अछि कि मन रखो विदाउट इंटरमीडिएरीज केवल राजा एंड तांको ऑफिसर्स नहीं तो छोटा कोई इंटरमीडिएट रहबेने देन बार्टरिंग वाज नॉट परमिटेड तुमको लागु जे स्टेटमेंट ठीक अछि हमें जानि जे कैश एंड काइंड रे कोहुतला टैक्स दिया होतला तो जदी काइंड रे दिया होछि दैट मींस बार्टर सिस्टम अछि बुझि होछि ना नहीं तो एठी स्टेटमेंट कोन अछि रॉन्ग अछि तो बचाइ जे व्हिच ऑफ द अबव आर करेक्ट whatever only माने 1 and 2 are correct then consider the following statement with reference to the school of Buddhism the idea of shunyata that is emptiness is associated with the madhyamika school hela eta kon achi ठीक अछि emptiness ta kodi achi madhyamik school le achi and yogacara school criticize the complete realism of the theravada buddhism जो थिला सेथरे से कहउथिला कि हमें कंप्लीट रियलिज्म रे बंचेबा दरकार एई जो स्कूल फिलोसॉफी एई स्कूल लो जो फिलोसॉफी को योगाचारा स्कूल बुद्धिज्म रे कोन करिछि क्रिटिसाइज करिछि एंड ता छोडा ए जो माध्यमिक स्कूल को भी योगाचारा स्कूल कोन करिछि क्रिटिसाइज करिछि एंड योगाचारा स्कूल कोथरे विश्वास करे ना मेडिटेशन ने थ्रू मेडिटेशन वी कैन अचीव salvation बुझियला मेडिटेशन कले ही पाई परबो सो फर्स्ट ठीक अछि एंड सेकंड भी ठीक अछि then consider the following pairs with reference to the administration of Maurya तो man देखि पारछो गोटे क्वेश्चन एठी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर केते सारा क्वेश्चन हमर एठो आसिलानी बुझियला नै कि मौर्यस मानकर एडमिनिस्ट्रेशन पल्लवस मानकर एडमिनिस्ट्रेशन तो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन रो केते सारा क्वेश्चंस आसिलानी तो तुम माने जानि परछो तो कि को जिंस ऊपर तुम फोकस करबा को पड़िबो आका डिफरेंट ऑफिशियल एंड समानकर डिस्क्रिप्शन बा समाननको को वर्क दिया हैतला फर्स्ट होची पोस्ट कोन एटा पोस्ट गराध्यक्ष हैला पोस्ट गराध्यक्ष अच्छा मते को पोस्ट वर्ड अछि बट एठी से देछि जज तो कोन होबो ठीक होबो भूल होबो तो एटा सी देले एठी कोन करूथिबे हां कोन से स्टोर में जोठी कि ना किछ पैसा रो ये
तो सेई ट्रेजरी ऊपर से काम करूथिबे तो तुमको एटा कोन लागुछ भूल अछि ना ठीक अछि भूल अछि बाकी मु तुमको सबु जाक ऑफिसर्स रो नोट्स डाकिथिली तो तुमे एटा जदी भल से पढिबो थरे जाई हबा एंड चीफ जज को कोन होतिला व्यवहारिक ताको कोन कहतिला व्यवहारिक देन समहर्त हेड ऑफ पुलिस किंतु हेड ऑफ पुलिस एक्चुअली के दंडपाल मन अछि ना नहीं स्वयं दंडपाल एंड ए समहर्तर काम कोन ना ये कोन करथिला रेवेन्यू ऑफिसर एंड ये थिला चीफ रेवेन्यू ऑफिसर एंड ताकू किए हेल्प करूथिला दैट इज युक्त एंड युक्त इज द सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर बुझियला ना बुझि पाइलोनी कि जो समहर्त से होची एक्चुअली चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ताकू हेल्प करिया पई के थिले युक्त युक्त माने के सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर देन प्रशस्ति होची हेड ऑफ द प्रिजन जो मानु बंदी करा होतिला तांकू कहा अंडर रे रखा होतिला प्रशस्ति अंडर तो एमाने होचंदी डिफरेंट ऑफिशियल जो मानु को ए काम सब दिया होतिला ताले एटा भी रॉन्ग हैला एंड एटा भी रॉन्ग हैला सो ए दिटा करेक्ट अछि बुझियला अच्छा हाँ तुम मानु कहितिली काली से नोट्स टा पठाइबो बट मो पाखरे इंटरनेट टा काली मोर माने खराब ही हेगला मु जान पेलिनी कोन हैला आज एठु जीबी माने से नोट्स टा तुमको आगे पठाइबे हैला तुम मान को भी दिया हैनी ना काहा को दिया हैनी तो आज मु जाई के एड जीबी एंड नेट तो ठीक हे जाई छै आज ही पठाइ देबे हैला हाँ हिनोजा कौन एंशिएंट इंडिया रे हिनोजा माने कौन आउटकास्ट हला एंड आउटकास्ट मानकर जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बा सोशल बैकग्राउंड ता जो तमरो दासस मानक ठारू भी कम थिला कारण से माननको गोटे टाइम रे स्टेट भीतर को पसिबे देन गोटे टाइम रे गोटे नियम थिला कि से माने बाहर को जिबे सनराइज पूर्व आसीबे सनसेट पूर्व पळैबे आ जदी न गले टोटल समस्त कोन हेबे सफा हबो सैनिटाइज करा हबो तेनु एगुड़ा भी हमें कवर करथिले हैला in the context of religious development in ancient India Visapantha Tarapantha Mula Sangha were related to kon that is subsects of Jainism एगुड़ा कोन सबसेक्ट ऑफ जैनिज्म माने रखो जैनिज्म को हमें दुईटा पार्ट रे डिवाइड करथिले कोन कोन दिगंबर हाँ दिगंबर एंड श्वेतांबर एंड दिगंबर रो सबसेक्ट गुडा कहूची ए तीनटा को विसापंथ तेरापंथ एंड मूल संघ बुझियला एगुडा होची कहार सबसेक्ट दिगंबर रो सो एगुडा कहार दिगंबर रो सबसेक्ट एंड सेमिति एंडी जो श्वेतांबर रो भी अछि कोन ना तमरो तेरापंथी मने रखो तेरापंथी गोटे मन रख मोर आउ टिके दीटा मन पडुनी हला म तमन डाकी देबी तेरापंथी गोटे मन रख आ एठी अछि तेरापंथ दिगंबर बुझियला सो सबसेक्ट्स ऑफ जैनिज्म सो ए जो तीनटा गो जति जैनिज्म न दे की तुमको दे देथंदा दिगंबर सेक्ट ताहाले भी आंसर कोन होइथंदा जदि जैनिज्म न दे की दिगंबर दे देथंदा ताहाले ठीक है था जदि सितंबर दे देथंदा भूले था बुझि पाइले बे कि गोटे क्वेश्चंस को हमें केमति सॉल्व करे कि सबसेट्स ऑफ जैनिज्म देछि माने पूरा कॉमन दे दिला सेतबन टिक मार देला कि जदि दिगंबर देथंदा ठीक हेथंदा बट सितंबर दे दिले भूले था तेरा पंथ किंतु तेरा पंथी होछि सितंबर रो मने रखो तेरा पंथ होछि दिगंबर तेरा पंथी होछि सितंबर ओके नेक्स्ट जिबा consider the following pairs dynasty and presently located in the state of कोठी अछि कुनिंदास कोठी अछि के जानि छ कुनिंदास ओडिसा हिस्ट्री रे केबे ना सुनि छ तेन सेही होले जदि टिके माइंडफुल खर्च करबो ई स्टेटमेंट ता भूल हे जिवो बुझेला नै कारण ओडिसा हिस्ट्री रे हमें केबे भी कुनिंदास विषय गोटे किछि जिंस हमें पढी नाही आणि कुनिंदास कोन ई गोटे ट्राइबल ग्रुप एटा गोटे कोन
ट्राइबल ग्रुप एंड एमाने कोठी रहउतिले जो हिमालयन स्टेट्स गुडाक रहउतिले लाइक नेपाल उत्तराखंड हैला हिमाचल प्रदेश एई पार्ट गुडाकर से माने रहउतिले बुझियला तेणु एटा कुनिंदास टा ओडिसा रे तो केबे भी नुह बुझियला तो एठी स्टेटमेंट कटि गला देन थे कहउची औदुम्बरस कोठ रहउतिले के कहि परिबो एंड पंजाब रे तो त्रिगर्तटा पंजाब रे ठीक अछि एंड एटा जो यदुयस टा होची माने होची ईस्टर्न इंडिया रहउतिले सो गुजरात टा को पाटे जाउची वेस्टर्न ने सो जदि गोटे भी स्टेटमेंट तमे न जानिच ताहले भी तमे स्टेटमेंट ठीक करि परिबो से कोन बचै इज आर करेक्टली मैच्ड तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड आ सब कोन छै एटा भी भूल अछि एटा आई थिंक नॉर्थ इंडिया रे एटा कोठी नॉर्थ इंडिया रे बुझि पार औदुम्बरसटा कोठी नॉर्थ इंडिया रे बट एटा देछि कर्नाटक दैट इज साउथ इंडिया देछि बुझि पाइले ना नै तणे एठी भी कोन हबो स्टेटमेंट रॉन्ग हबो ताले कोटा केवल ठीक अछि ए स्टेटमेंट तीर्घर्तटा ठीक अछि जोटा कि पंजाब रे शी ओनली करेक्ट ओके with reference to Gurjar Pratihara's dynasty consider the following statement it was founded by Nagabhatta कोन एटा को मत कहिबा को पड़िबो so eta hochi ठीक अछि then it was involved in a tripartite struggle with the Palas and the Rashtrakutas कहिबा को पड़िबो कोथि पय हेतिला tripartite struggle काहा को very good then poet Rajasekhara was associated with the king of Mahendrapala कौन होबो Mahendrapala so Mahendrapala कौन होबो आंसर ठीक अछि and it was elaborately described by Al-Masudi in his work Muruj al-Jahab आंक विषय एइथरे ही भलसे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जायतिला तो फोर स्टेटमेंट जाको कौन अछि करेक्ट अछि बुझियला नेक्स्ट जिबा हमें Which one of the following statement is correct with reference to King Dharmapala of the Pala dynasty? He was the founder of Pala dynasty. Pala के गोपाल एटा समस्त जानिछ हां एटा को समस्त आंसर कहिलो मैं पढि देछ एटा सो गोपाल the founder of Pala dynasty तो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन हिला रॉन्ग हो गेला ओके सो नेक्स्ट टाइम में जिबा He defeated the Pratiharas and annexed Kanus into his kingdom. एडा होइथिला कि हेतिला कोन हेतिला किए डिफीट हेतिला धर्मपाल डिफीटेड हेतिले बाय कहा द्वारा प्रतिहरस मानक द्वारा की थिला प्रतिहरस रो रूल एंड प्रतिहरस मानक की पुणी हरेला राष्ट्रकूटस माने एंड राष्ट्रकूट किंग किए थिला अच्छा सब ग्रुप रे सुशील जीव हैला मु मेनका मैडम को पठै देबी से सब ग्रुप रे सेटा को शेयर कर देबे तमे को के ग्रुप कोन मु जानिनी मु से ग्रुप विषय रे किछि भी बुझेनी बाकी मु मेनका को पठै देबी से सब ग्रुप रे पठ दो सब पिला पाइबो हैला किंग के थिला ध्रुव एंड से कहा को हरै देथिले तमरो प्रतिहरस मान को हरै देथिले सो गोटे स्टेटमेंट ठीक हबो कि ही फाउंडेड द फेमस महाविहार ऑफ विक्रमशिला एटा ही करेक्ट स्टेटमेंट हबो with reference to Nashik caves consider the following statements they are known as Pandav Leni believed to be built by Pandavas from the Mahabharata they belong to both Hinayana and Mahayana Buddhism मने रख फास्ट रे एटा थिला हिनायन परे एटा कोठी आसिला महायान को आसिला किंतु प्रथमे हिनायन ही स्टार्ट हेतिला किंतु जेहेतु से पचाछि कि बोथ रे तो हां एटा भी ठीक हबो एंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक हबो they have inscription written in Brahmi script using Prakrit language ए स्टेटमेंट भी ठीक हबो सो आंसर से देछि करेक्ट आंसर कोन हबो
So all of the above are correct. Then consider the following pair. Site ଆଉ ତାର features କଣ? ତାୱାଙ୍ଗ ଟା କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। କୋଉଠି? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ହେଲା? So ସେ କହିଛି ତାୱାଙ୍ଗ ଟା ହଉଛି chief Buddhist center during the reign of Pallava dynasty. No. ତାୱାଙ୍ଗ ଟା ହଉଛି କଣ? Largest Buddhist monasteries in India. And ଏଇ ଯୋଉ ନାଗପଟ୍ଟିନମ ଟା ହଉଛି କଣ? Chief Buddhist center during the reign of the Pallava dynasty. And baharutta correct अछि representation of Buddha in the form of symbols. एठी देखिବାକୁ मिले. So only third टा ही correct अछि बाकी ए दिटा interchange हे जाय छै. तो तुमन सेटा पर ठीक and Pallava dynasty ऊपर भल से टिके पढी के जीव. हैला Pallava dynasty, Maurya dynasty, Chola, Palo एगुडा को टिके भल से पढी के जीव. कारण क्वेश्चंस बारंबार सेइथुर ही बुले बंगे के आसुचे. And तमे बारंबार आइले भी भूल करूचो. Then with reference to the Hoysala, I mean, Hoysala temple upar question solve करथिले कि? Okay. All the chambers of the temple have interconnected शिखरस. ठीक अछि. Then काली तो मते softstone विषय पचाथिला. ना नहीं कि कौन सेटा बोली एगुडा को. Chloride, schist ताकू कहा जाय तो एटा कहा जाय softstone जोटा कि main building material use करा जाय छै. Then they were usually built on Jagati in star-like pattern. Star-like pattern है ठीक अच्छे. So 1, 2, 3 are correct. And Vijayanarayana temple at Belur is an example of Hoysala architecture. So इटा भी ठीक अच्छे. तो मैंने ये जो जेती के दिया है ची बा Hoysala temple architecture ऊपर टिके पढ़ी दबो. So that कि एगुडा का तमे भल से करि परिबो. Consider the following statements. The rock-cut temples of Mamlapuram are influenced by the Buddhist rock caves. तो सेते बेले rock-cut temples टा कहा द्वारा influence होतिला? Buddhist rock cave द्वारा ही influence होतिला. And Pallava architecture shows the transition from the rock-cut temples to the structural temples. मन रखो Pallava architecture ही अधिक temples structural way रे build up semane करिथिले. And Sikochi Sor temple was built during the reign of Chola ruler Raja Raja. No, eta kaha time re heitila? Krishna the first. Hela, tanko time re heitila Sor temple ta. So tame only 2 statements are correct. हाँ हाँ मु सब स्टार्ट कर देबी आ किछि मु आउ को फैकल्टी किछि पढेबेनी मु सब पढे देबी. Consider the following statements with reference to the Vijayanagar architecture. तो तम कहि ना ए छोटो छोटो पॉइंट गुडा को तमे कहां पर डिपेंड आउट करनी बिकॉज़ इट्स योर जर्नी. मन रखो एटा तुमको 399 पोस्ट भितरे रहिबार अछि. आ एबे भाबनी कि ओएस नाही एते पोस्ट मु पढिबिनी नेक्स्ट वर्ष देबी. सिन सबले नेक्स्ट ही भाबुतिबो. बुझियला नै गोटे सर्विस तुमको बर्तमान नीड ऑफ द टाइम कोन कि हुकर कुक मते सर्विस भीतर एंटर करबार अछि. तापर तमे यूपीएससी दियो बा तमे देश छाडी के पळा किछि नै हैला. किंतु फर्स्ट कोन तुमको भीतर को जिबार अछि. एंड सेति पई आ तमे कहा को वेट करनी कि क्लास रे के पढेबो न पढेबो निजे को जिंस गुडा को मु कवर करबी क्वेश्चन कोथुरा आसुची बारंबार से गुडा को डेली पीवाईक्यू करो आ मॉक टेस्ट को एनालिसिस करो क्लास होइला देन तापर निजे जाई के एटा को एनालिसिस करो को गुडा को अधिक आसी से गुडा ऊपर फोकस करके निजर शॉर्ट नोट बनाओ आ प्रिपेयर करो. बुझियला. Vijayanagar, it is characterized by the absence of uses of mortar. ठीक अछि. Bell or Yali were mythical beasts found in Vijayanagar temple pillars. It combined Dravid Besar and Indo-Islamic styles. कोटा हबो करेक्ट एटा Dravid Besar तो ठीक अछि हैला. Dravid Besar तो ठीक अछि. So 3 statement correct, 1 statement correct. But 2 रे हमें confusion little अछि तो से पचर छि कोटा. So हाँ ठीक अछि. अच्छा तुम किन जान लो ठीक अछि कम पढिथिलो को सोर्स रो एठो पढ देइछ. So एटा कोन कि एटा ठीक अछि कि मोटर रो एब्सेंस थिला and Balo or Yali were mythical beasts found in Vijayanagar temple pillars.
एमानकर जो स्कल्पचर गुड़ाक देखा जाए एंड इट कंबाइंड द्राविड़ एंड बेसर स्टाइल तो आम जाने से कॉम्बिनेशन करी तो थर्ड स्टेटमेंट पक्का करेक्ट थिला हैला तो तुम्हें ए भलिया भी सॉल्व करि पारिबो एंड पेयर क्वेश्चन सेतर बहुत सॉल्व करके जाओ हैला काहे ना जोठी भी 1 2 अछि ना तमे ताको 1 2 काढी दियो तुम्हें पेयर करके करो हैला कारण ए वर्ष पेयर क्वेश्चन बहुत आसीबो विथ रिपर मतलब सेदिन भी कहितली नगर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर हैला एगुडा को टिके टिके भलसे नोट करके जाय थाओ With reference to Nagar temple architecture, consider the following statement. The features of the vertical roofs, जहाँ को हमें रेखा देवल को उचे इठी मिले, ओडिशा स्कूल टारे, हैला, and तापरे पंचायतन style of temple making was followed by Khajuraho school, ठीक अछि, and Solanki school temple were designed in a way that during the equinoxes the sun rays fall directly into the central sign. तो एटा तुम कोणार्क रे भी देखि पारुथिबो तो डिफरेंट ए जिंस गुडा को तो एगुडा ऑल स्टेटमेंट करेक्ट एंड एग्जाम रो प्रैक्टिकल कथा कहिबे एई वाला स्टेटमेंट जब देखियो एते भितरु भाबियो के स्टेटमेंट गुडा को ठीक अछि काहे कि ना एते भितरु जिंस गुडा को जदी पकेइछि माने तो से पिलाम के छोड़ जणेया को चाहूछि हैला तो टिके टिके जदी तुम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करबो ताले एई वाला स्ट्रेटजी गुडा को डेवलप करबो आ जदी 10टा मॉक प्रिपेयर करके जाइथिबो सेठी कह कि मु ए भलिया इंजीनियरिंग स्टार्ट कर देबी तो हबो नै भूलभाल हबो तापर आसी मते गाली करबो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करले तुम माने स्ट्रेटजी टा जानि पारिबो तो एटलीस्ट 70 मॉक 70 मॉक प्रिपेयर हे कि जाओ प्रीलिम पूर्वरु तापर देखो केमती एग्जाम होउची ना ना अच्छा अजंता केव पेंटिंग्स अगेन आसिला they were made by the temporary technique of use of pigments ठीक अछि they are marked by complete absence of blue color Bodhisattva in Tirubhanga pose is painted as a shrine guardian and Chinese traveler find and mentioned Ajanta caves in their writings फोटो पक्का ठीक अछि अजंता केव्स से दि जण लेखि चंती देन बोधिसत्व कथा भी तुम माने पढिथिबो अजंता केव्स जदी टिके के पढिथिबो बोधिसत्व बा त्रिभंग पोज कथा भी पढिथिबो देन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर ए स्टेटमेंट प्राय तो पढि न थाओ पिला माने हला तो ब्लू कलर टा कंप्लीटली एटा कोन एब्सेंस एठी मन रख एटा को कलर एंड एब्सेंस अछि ना प्रेजेंट अछि तो एटा ठीक अछि and they were made by the temporary technique तो एटा भी ठीक अछि so 4 statements are correct तो किछि किछि जोडा यूनिक स्टेटमेंट गुडा को टिके मन रखि दे थाओ तो तुमरो एटा मु कहबी ई क्वेश्चन ता तुम रखितिबो प्रीलिम पूर्वरु थरे पढि देकी पळेबो हैला 2-4 दिन थिबो प्रीलिम टी पढि दबो इट इज ए ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा ओडिशा देला एंड एठी आउ किछि दिन से देखिबोनी पट्टचित्र मार देकी आसीबो हैला एंड पट्टचित्र क्वेश्चन तमरो 2020 या 21 ने पढिथिला हैला पट्टचित्र अछि ओडिशा पार्ट अछि तो एटा पढि दम Consider the following statement with reference to the Thumri style of music. Hela, Thumri style of music. It is inspired by the Bhakti movement. ठीक अछि एजे statement and it is composed in the Braj Bhasha dialect. एटा भी ठीक अछि हला कि भक्ति मूवमेंट तर इंस्पिरेशन एंड तर डायलेक्ट कोन ब्रज भाषा डायलेक्ट देन अनलाइक पंजाबी स्टाइल द पूरा फॉर्म एटा थुमरी जो म्यूजिक ता मने रखो ए जो थुमरी म्यूजिक ता एटा टू टाइप्स अछि गोटे होची कोन ना तमरो पंजाबी स्टाइल आउट होची तमरो पूरब एंड ए पूरब ता होची बहुत स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे जो निद आसी जिवो जो म्यूजिक सुनिले हला सेटा बट पंजाबी माने कोन हेतिबो धूमधाम से हेतिबो तो एठी जो देइछि कि फास्ट एंड लाइवली टेम्पो एटा होची कोन फास्ट एंड लाइवली टेम्पो
एटा होची कोन पंजाबी किंतु एठी से कोन देछि कि पंजाबी भलिया एटा होची कोन फास्ट एंड लाइवली टेम्पो तो एटा कोन है स्टेटमेंट रॉन्ग होई जिवो देन इट इज वाइडली यूज्ड इन द कथकली परफॉर्मेंस नो कथकली रे हमर कोटा यूज करा जाय कर्नाटिक म्यूजिक को यूज करा जाय मन रखो को म्यूजिक को कर्नाटिक म्यूजिक को ना कि ए ठुमरी म्यूजिक को यूज करा जाय बुझला ना सो कथकली को स्टेट रो देन नेक्स्ट होची तो माने परे कथा हेई परिबो बट चैट रे बसी के कथा होचो एउडा कोन ठीक वर्तमान आमे पढिबा देन चैट रे परे कथा होबा कि तुम माने पर्सनल नंबर नै कथा हेई परिबो ओके जुगलबंदी a form of competitive play between the dancer and the tabla player माने तबला प्लेयर बसिथिबो ता से तो डांसिंग होथिबो एंड सेटा गोटे जुगलबंदी होय दि जन भितरे तो से कहि जे ए जुगलबंदीटा को डांस फॉर्म रे अछि तो सेटा को डांस फॉर्म रे अछि कथक रे हैला जुगलबंदी कथक मन रखो अच्छा हाँ आउ गोटे जिनस मन रखिबो ए जो क्लासिकल डांसेस गुडाक तार को डांसर्स माने अछंती बा गुरुज माने अछंती आउ काहा को रिसेंटली कोनोसी अवार्ड दिया जायछि सेगुडा भी टिके पढी कि जायथिबो हैला कि को डांस फॉर्म तार इंपोर्टेंट की डांसर अछंती आ पर्टिकुलरली प्रेजेंटली तांको कोन अवार्ड दिया आइछि तो सेटा टिके पढी कि जायथिबो Consider the following statements with reference to Bharatanatyam. It utilizes the Abhinaya Darpanam of Nandikeshwar for the Angika Abhinaya. ठीक अछि then होची Cuttack Mukha Hasta. Cuttack Mukha Hasta is one of the principal mudras symbolizing Om. मन रख ए गोटी डांस फॉर्म जोठी ओम रो सिंबलाइज करा जाय हैला तो सेटा भी ठीक अछि आंसर एंड एटा भी ठीक अछि देन अल्लारिपु इज द कंक्लूडिंग पीस एठी ही से भूल कर देला कारण जो माने टिके डांस फॉर्म विषय जानथिबो अल्लारिपुटा होची तळे फर्स्ट स्टार्ट करा जाय भगवान कर आशीर्वाद नेबा पे अल्लारिपु करा जाय तो एटा गोटे परफॉर्मेंस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस बट एटा देछि कंक्लूडिंग पार्ट दे देछि तो सेतमे एटा रॉन्ग हे जिवो and it poses are way deficit the Nataraj temple एटा ठीक अछि तो कोडा करेक्ट पचारि छि तो से अनुसार तमे करबो ओनली 3 आर करेक्ट अच्छा काली कालबेलिया विषय में कहिथिली तुमको फोक डांस विषय रे छौ कालबेलिया काली कहिथिली ना नहीं कालबेलियाटा कोठी राजस्थान में वेरी गुड मन अछि राजस्थान में सो एठी हरियाणा देछि तो कोन होई जिवो भूल होई जिवो थांगटाटा कोठी होबो बिहार रे होबो ठीक मणिपुर रे होबो ठीक अछि एंड बिरहाटा कोठी बिहार रे होबो ठीक अछि बट काई कोटी कल्ली ए देखो ए हां साउंड रो तमे आंसर जानिबो काई कोटी कल्ली मींस एटा गोटे साउदर्न स्टेट रो ही हेतिबो तो एठी से मध्य प्रदेश दे देछि तो कोन होबो रॉन्ग होबो जदि तमे न जानि छबे टिके ना निजर सेंस यूज करबा एंड करि परिबो वर्ड को नै कि केमिति वर्ड ता प्रोनाउंसिएशन होउची तो सेटा एक्चुअली अछि तमिलनाडु रे ओके तो कौन कहि करेक्ट पचारि छि करेक्टली मैच तो 2 and 3 are correctly matched sorry it is Kerala not Tamil Nadu it is Kerala hela Kerala last with reference to the temple architecture which one of the following best describe the term parikram amar recently heji huge corridor parikrama hela parikrama kona huge corridors around the garbhagriha hela with reference to Kanishka, consider the following statement. He administered his territory from 2 capitals, that is Purushpur and Mathura. किए एटा मन रखिचो कि एटा कनिष्क जते पढा हैतिला हमर क्लास रे मु पुरुषपुर आ मथुरा इंपोर्टेंस कहितली तम मानको फर्स्ट हमर कान्नुज रो इंपोर्टेंस कोन पई थिला
So different cities गुड़ाकर importance मैं तुमको कही हिस्ट्री पढ़ेला बेले. So first होची हमर कोन कानूज रो importance, then मथुरा रो importance, then पाटलिपुत्र रो importance काहे की रहिला बुझी होच ना नहीं. तो ए भले different cities रो importance, मथुरा रो importance कोन पई trade route. It is the joint between Uttar Pradesh and Dakshin Pradesh. Very good. Hello. So he तंगर दुईटा कैपिटल थिला गोटे पुरस्पुर आउट होची मथुरा. Then scholars like Dhanavantri and Sanku associated with his court ना एमन कहा कोर्ट रे थिले कहा कोर्ट रे थिले समस्त बाइटा होमवर्क कहा कोर्ट रे थिले हैला. सो नेक्स्ट जेते 13 टा भी मु डिस्कशन करबी तो 13 ने डिस्कशन करला बेले मु एटा पचारिम तम मानु को हैला. बाकी एटा नथिला तो स्टेटमेंट तो भूल हैला एटा ठीक अछि. He issued coins in bilingual inscription Greek and a local language. तो एटा कोन अछि ठीक अछि. तो से कहै जे above are correct तो 1 and 3 are correct. and एटा मते कहिबो समझते स्वयं कहिबो तो इथरे तो देई देथिबो कहिबो कोन. With reference to Mahajanapadas the first, consider the following statements. He promoted the spread of Jain and Saiva philosophy. He authored Kaviraja Marga, an earliest known treatise on the Kannada grammar and poetics. Then Jinasena, a prominent scholar, was his spiritual teacher. एटा तमनको कहिथिली जिनसेना को विषय रे. बाकी एगुडा तमे जदि न बुझी पारुछ ताहले टिके पढिले आउथरे बुझी पारे. बट जिनसेना कथाटा तो बुझी पारिबा ना कि जिनसेन तांगर कोन थिले स्पिरिचुअल टीचर थिले. एंड ये जैनिज्म एंड शैविज्म दीटा को कोन करूथिले प्रमोट करूथिले. एंड कविराज मार्ग earliest known treatise in Kannada grammar and poetics सेटा को विषय करथिले. So total 1 2 3 are correct. Ellora caves again asila. The Hindu caves were constructed during the reign of Kalachuri dynasty. ठीक अछि Kalachuri dynasty. And the Kailasa temple in these caves was developed by Mahendra Varman. The boar incarnation of Vishnu is found in these caves. देखो Kailas temple टा actually हाँ शिवंकर जे but महेंद्र वर्मन कर नथिले बुझी होछ ना नहीं. देन होची तमर एटा कलाचुरी डायनेस्टी टा ठीक अछि 1 is correct. बाकी बोर इनकार्नेशन तो विष्णु कर सेठी नथिला तो विष्णु तो चंदी माने भूल हे जिवे बुझियला नहीं. तो थर्ड भी इनकरेक्ट हे जाउची तो से पचाची कोन करेक्ट पचाची. सो ओनली 1 are correct. 1 is only correct. Then Gupta age sculptures विषय पचाची. They were carried Gupta age जदि स्कल्पचर पचाची गोटे स्टेटमेंट सबले मन रखिबो एटा क्रीम कलर सैंडस्टोन नु बना हे जाइथिबो हैला. गुप्ता रे जदि पचाची क्रीम कलर टा पूरा मन रखिबो. गुप्ता स्कल्पचर क्रीम कलर. And the sculptures were neatly dressed and lacked any form of nakedness. हैला क्लियरली ड्रेस थाई तांगा स्कल्पचर गुडा का आ नेकेडनेस एते न थाई. तो एटा भी ठीक अछि. They often conveyed symbolic attributes associated with the deities. एटा भी ठीक अछि हैला. तीनटा को स्टेटमेंट ठीक अछि. With reference to the Carnatic music, देखो ए जो पुरंदर दास को कौन कहा जाए पितामह ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक. मन रखो पुरंदर दास को कौन कहा जाए पितामह ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक. मन रखो एटा. एंड कर्नाटिक म्यूजिक कोठी यूज हुए कथकली रे. एबे जस्ट हमें पूर्वरु पढिथिले. एंड से कहूची कि द कृति बेस्ड आर्ट विथ एम्फासिस ऑन द लिरिकल क्वालिटी ऑफ द म्यूजिकल पीस. ठीक अछि एटा भी ठीक अछि कि पुरंदर दास थिले. एंड से एथि आउ गोटे जिंस कहूची कि इट स्ट्रिक्टली फॉलोज द टाइम थ्योरी ऑफ रागोस. मन रखो कर्नाटिक रे
टाइम थ्योरी रो कोनोसी वैल्यू नाही माने टाइम थीम जो जिंसटा एटार वैल्यू नाही कोठी कर्नाटिक रे बट ए स्टेटमेंट पई कोटा ठीक होबो जदी थांदा हिंदुस्तानी म्यूजिक मन रख जदी हिंदुस्तानी म्यूजिक थांदा ताले ए स्टेटमेंटटा करेक्ट हे थांदा जेतु एटा कर्नाटिक म्यूजिक ऊपर अछि तेनु टाइम रो कोनोसी फैक्टर कर्नाटिक म्यूजिक रे नाही बुझियला क्लियर एंड पुरंदर दास को कौन कहा जाए पितामह और ग्रैंड पेरेंट ऑफ कौन कर्नाटिक म्यूजिक सो 1 and 3 are correct 1 and 3 are correct world is full of suffering किए कहतिला बुद्धिज्म सो मु बेसी एटार डिस्कशन करूनी एंड कोटा से दुखर कारण कौन डिजायर हाँ which of the following dynasties find their mentions in the inscription of Ashokas केरला inscription को जिंस मेंशन करा है जे पांड्यस केरला पुत्रज सत्यपुत्रज एमानक विषय रे कहै थिला बट पल्लवस मानक विषय रे तांगर कोनोसी इंस्क्रिप्शन ने किछि नाही मन रख हला कहा का विषय रे पांड्यस को विषय रे अछि केरला पुत्रज मानक विषय रे अछि एंड सत्यपुत्रज मानक विषय रे अछि एंड केरला पुत्र कहा को कहै जे सब पढ़ी की खाई जाओ किछि मन नाही समस्त खाता पढ़िबा आज बसिके which one of the following was referred to as yavana priya कोटे कि रे कोन पेपर with reference to the Kaktiya dynasty previous class रे भी कहिथिली Kaktiya dynasty रे importance अछि so Marco Polo visited the kingdom during the reign of Rudrama Devi ठीक अछि then the Rampa temple made using floating bricks ठीक अछि and ठीक अछि तो दीटा स्टेटमेंट हिन देइछि बाकी देखिबा ठीक अछि ना नहीं both 1 and 2 are correct तो रुद्रमा देवी को टाइम रे ही मार्को पोलो आसीथिले हैला the sun temple at Konark किए बनैथिले ईस्टर्न गंगा एगुडा तो मु बुझौनी हैला with reference to the Indus Valley civilization consider the following the pinching method was used for making terracotta sculpture ठीक अछि and mother goddess भी तमरो terracotta थिले आउ terracotta toys रे आउ कोन कोन different animals हैला तो animals भी सारे evidence भी हमको ए terracotta toys रो ही मिली छि so both 1 and 2 are correct then consider the following statement with reference to Jain school of philosophy according to the Setambar school women cannot be tirthankaras एठी भूल अछि कारण women can be tirthankaras एटा कोथ रे Setambar रे okay then से कोछि दिगंबर monks lived naked तो ठीक अछि कि worldly possession तांको किछि दरकार नथिला तेनो से naked हे कि सब बेले रहुतिले हैला so first कोन अछि wrong second कोन अछि right अछि तो 2 only correct then which one of the following statements is correct with reference to the account of the Mauryan empire as described by Megasthenes मन रख मु तमन कहितली कि दुईटा सोर्स हमर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन मिशन रे जाना जे गोटे होची कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र आउट होची मेगास्थेनिसकर जहा से बनैथिले रिपोर्टटा तांकर तो ए दीटा को सोर्स तम माने पढी के जीवो हैला बेले बेले को हुए ना डिफरेंट ऑफिशियल्स मानक विषय रे कौटिल्य कहि नांती बट मेगास्थेनिस से जिंसडा कहिसंती तेनु तुमे सेटा टिके देखिथिबो and the Indian society at the time was divided according to the occupations pursued by the people ठीक अछि ना भूल अछि कारण डिफरेंट ऑक्युपेशन अनुसार मौर्यन सोसाइटी थिला बुझियला ने आणि ऑक्युपेशंस गुडा को कोन इठी अछि कि कोन कोन ऑक्युपेशंस गुडा को philosophers cultivators hunters headmen artisans traders overseers जाको में spices कहूचे हां then होची kings रो counselors माने तो डिफरेंट ऑक्युपेशन ने सोसाइटी थिला then next कहूची कि registration of birth and death was handled by a separate administrative committee एटा भी ठीक अछि
हैला बर्थ एंड डेथ रो रजिस्ट्रेशन भी सेपरेट गोटे हैंडल करथला गोटे ऑफिशियल ता पे थिला एंड से हैंडल करथला तबे से कहूची without any governors the king exercise direct authority over every provinces अच्छा मते एटा को करेक्ट होबो केबे भी गोटे किंग पॉसिबल कि से डायरेक्टली सब एडमिनिस्टर करबो तो सेते से कोन रखिबो प्रोविंसेस रखिबो तो एठी से देछि कि प्रोविंसेस नथिला विदाउट गवर्नर से काम करथिले तार स्टेटमेंट कोन हेबो रॉन्ग होबो then कहूची regulation of weights and measures was the responsibility an officer called अंतःपाल मन रख अंतःपालटा होची कोन सिक्योरिटी से सिक्योरिटी काम करूथिला तो से कहूची एठी कि वेट एंड मेजर की करथिला तम बाई होमवर्क रहला बाकी अंतःपालर काम कोन सिक्योरिटी जो तांगर डिफरेंट फोर्स गुडाको थिला बा फोर्स गुडाको थिला से गुडाको सिक्योरिटी दउथिले हैला अच्छा so 1 and 2 are correct ए दिटा तो भूल है कि गवर्नर्स थिले एंड तमरो कोन वेट एंड मेजर टा अंतपाल करनथला अंतपाल कोठी थिला सिक्योरिटी पाई थिला consider the following statement with reference to Seno dynasty and it is सामंत सेन ही करथिले and it bengal region ही थिला बुझेला then Vijay Prasasti was composed by Srihansa in praise of the king Vijay Sena so it भी ठीक अछि both 1 and 2 are correct तो तमे सेनो डायनेस्टी टिके पढी दबो हैला सेनो डायनेस्टी देन तमरो तांको टाइम रे को कोर्ट पोइट माने थिले हैला हम पढितिले आगुरु सेनो डायनेस्टी लक्ष्मण सेन हैला एगुडा टी पढी देकी जिवो then type of poetry and तार origin कोन type of poetry अच्छा ओडिसा रे तो काजी नाही हमु लागु छी ओडिसा रे काजी अछि हां ओडिसा रे अछि एटा नाही तो टिके भी जदि तुम ओडिसा हिस्ट्री किछि पढिथिबो ताले एटा को रॉन्ग कर देबो कि एटा तो नाही ओडिसा रे बुझि होछ ना नै कि ए टाइप रो पोट्रे कोठी नाही ओडिसा रे नाही गोपी चंदन सौराष्ट्र रे अछि कारीगरी तमिलनाडु रे अछि एंड तमरो जो डालगेट टा भी कोठी अछि जम्मू एंड काश्मीर नै मतलब होछि ए गोटे ही ओडिसा रे तो जम्मा ही नाही तो जदि तमे टिके ए जिंसटा को मार्क करबो कारण ए जिंसटा हमें टोटल भी पढि नै only 3 pairs are correct कारण ओडिसा रे सेटा नाही एंड सेटा कोठी अछि तमरो राजस्थान रे ओडिसा रे नाही राजस्थान रे ओडिसी dance form very important questions for the OCS it was primarily practiced by the Maharis and patronized by the king Kharavela ठीक अछि Kharavela को patronize देथिले ओडिसा dance को ओडिसी dance को it is a unique form of dance which symbolizes the element of fire मु तुमको किछि किछि डांस रो एलिमेंट एबे डाकी देबी तमे लिखि दबो हैला ताको स्टार मार्क करके रखिथिबो एंड पर्टिकुलरली ओडिसी डांस रो कोन एलिमेंट सेटा को तो स्टार मार्क करबो then it is consist of बातु नृत्य with त्रिभंग and chalk postures एटा भी ठीक अछि then उदयगिरी खंडगिरी के shows carving of this dance form एटा भी ठीक अछि सो गोटे स्टेटमेंट हमको लागु छी कि एटा कोन अछि भूल अछि तो मु तुमको किछि डांस फॉर्म रो एलिमेंट गुडा को डाकी दोची तमे लिखि दियो ओडिसी रो होची एलिमेंट ऑफ वाटर ओडिसी रो एलिमेंट ऑफ वाटर कुचिपुड़ी आर्थ जल्दी जल्दी लिखो तमरो ये अछि ना सीसैट क्लास अछि कुचिपुड़ी रो आर्थ मोहिनीअट्टम रो एआर आर्थ एआरटीएच पृथ्वी आर्थ एंड मोहिनी नाटम एआर मोहिनी नाटम होची एआर भारतनाट्यम होची फायर भारतनाट्यम फायर कथकली होची स्काई
कथकली होची स्काई। सो ताले इटी फायर दे आंसर कौन हबो रॉन्ग हबो कौन हबो ताले आंसर वाटर बुझियला बे एंड फायर कार बुझियला अच्छा ए क्वेश्चन दा मु तम मानु को देली कि तुम माने सॉल्व करबो नेक्स्ट क्लास रे मते कहबो हैला हां आ गुटे क्वेश्चन हैला आ गुट तो ए क्वेश्चन दा तुमको जो पोट्री रो इवोल्यूशंस मु पढाईथिली तो सेटा मते तुम माने सॉल्व करके दबो नेक्स्ट क्लास रे ओके देन लास्ट क्वेश्चन हमें खाली जस्ट देख दबा कोन अछि Consider the following statements with reference to the Vedic literature. अच्छा Vedic literature दुटा गोटे कौन श्रुति गोटे होची कौन श्रुति लिटरेचर आ गोटे कौन स्मृति एंड श्रुति टा कौन सब हेड सुनी की मन रखिबो एंड से कहिची इट हैज बीन ओरली ट्रांसमिटेड फॉर सेंचुरीज केवल ओरली कथा कहि की ट्रांसमिटेड होतला जण को आ जण पाखरु जणे कहिबो आ जणे सुनिबो हैला आ एठी तापरे कहिची एंड मन रख ए श्रुति रे ही तमरो फोर वेदस आसुतिला जो फोर वेदस तमरो अछि एटा श्रुति रे ही आसुतिला एंड आर डिफरेंट जेमति कि उपनिषद अरण्यक हैला संहित एगुडा थिला तेनो एठी से कहिची उपनिषद रा होची स्मृति लिटरेचर ठीक हो ना भूल हबो कारण स्मृति रे नो एटा होची श्रुति रे रहूची कारण वेदस रो जो डिफरेंट पार्ट्स गुडा को रहला सेटा होची श्रुति लिटरेचर रे तो सेति पई एटा सेकंड स्टेटमेंट ता कोन हबो रॉन्ग हबो एंड फर्स्ट स्टेटमेंट ता करेक्ट हबो सो आंसर कोन हबो ताले only one is correct बुझियला ना बुझियला नि समस्त क्लियर अंकर देखो कमेंट समस्त क्लियर ओके कार कोन डाउट रहिला किछि भी डाउट नहीं सब बुझी गला